Good afternoon. You're with me, Tanima Biswas, and our top story is about jobs and unemployment. With unemployment being a major concern ahead of the Lok Sabha elections, the central government is now preparing to roll out a mega apprenticeship program, specifically targeting students of humanities and other non-technical courses across private and government institutes in the country. The aim is to provide more employment opportunities to graduates. The Ministry of Human Resources Development, Labour and Skill Development are set to work together to train undergraduates and create more jobs starting 2019. And that seems to be the agenda for the new Madhya Pradesh Chief Minister as well. Kamal Nath has now kicked off a fresh plan to boost jobs in the state for locals. The Chief Minister has said that companies that hire 70% local talent will receive incentives. This is one of the first steps taken by the Madhya Pradesh government to deal with the job crisis in the state, which has seen a number of qualified job seekers rise over the recent years. जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की जो हम इंसेंटिव देते हैं ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल होए मध्य प्रदेश से होए कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो. Now this of course comes in as soon as Kamal Nath took over as the new Chief Minister of the state. Remember that unemployment was one of the big issues and also made a poll plank by the Congress ahead of the assembly elections. I'm joined by Ms. Anila Singh on the phone line from the BJP. Anila Singh, thank you so much for speaking to Mirror Now. Ma'am, if you could tell us your first reaction to the fact that this is one of the first decisions taken by Kamal Nath in Madhya Pradesh. He has not said anything new. It is mandatory for the factories that they should hire almost 60 to 70% of the local people in their units. So if he is announcing this, so he is not saying anything out of box. The main thing is that how he will get it implemented. Right. Ma'am, we have in fact travelled across the states ahead of this assembly elections, whether it was in Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Rajasthan, and we saw unemployment coming up as one of the major grievances especially by the youth and first-time voters in the state. And also, the fact is that, as you were saying, yes, of course, it is a rule and he's not saying anything new. But then we saw major lack of implementation on the ground. And that is something in all these three states, your government, BJP, was in power. Not only in these states, if you talk about whether the state is by Bharatiya Janata Party government or not, you will find it as a rampant practice that the units, the manufacturing units or different factories, they do not hire the local crowd. They hire from outside. So that is why I am saying it is good that Kamal Nath ji has announced this. But at the same time, we are going to watch that how he is going to get it implemented. Is he going to throw all the people who are in the factory from other states out? And then he will get the Madhya Pradesh youth re-employed in all those units? Then he should be prepared. The same repercussion can happen in other states as well of Madhya Pradesh people. So, I mean, before he says something, at least he should do some working and then he should react. And I think he's getting too overexcited after becoming Chief Minister after so long. And he's the first time CM of Madhya Pradesh. Right. Ms. Singh, thank you so much for speaking to Mirror Now. I'm also joined by KK Mishra, an MP from the Congress party. Mr. Mishra, thank you so much for speaking to Mirror Now. Kamal Nath has, in fact, made a few significant announcements after taking over as the Chief Minister of Madhya Pradesh. But as we were speaking to the BJP representative there, Ms. Anila Singh, she was essentially saying it's good that he is making these announcements. But a lot of people have questions on how exactly is he going to implement this? Because even we have seen, while covering the elections this time, that unemployment is, of course, one of the major issues. But then the fact that a lot of outsiders are occupying jobs in these states. So how exactly is the Congress government going to deal with that conundrum?
देखिए, नौजवानों को रोजगार को लेकर कमलनाथ जी ने शपथ के तत्काल बाद अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। इसके पहले जितनी भी मध्य प्रदेश में 15 सालों में करीब 9 इन्वेस्टर मीट हुई हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च होकर सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की ब्रांडिंग की गई, रोजगार किसी को नहीं मिला। एमओयू जितने हस्ताक्षर हुए थे वो एमओयू धरती पर आज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि कमलनाथ जी ने अपने विजन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें मध्य प्रदेश के नौजवानों को 75% उन इंडस्ट्रीज को नौकरी देनी होगी, तो मैं सोचता हूँ कि बेरोजगारी की दिशा में उनके इस बेहतर विजन को सराहा जाना चाहिए। जी मिस्टर मिश्रा, ऐसा हम कभी नहीं कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, बट क्या रोड मैप है इसके लिए आगे, यही हम पूछ रहे हैं कि डिसीजंस लेना एक तरफ की बात है, बट दूसरी बात ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्लान आया है आप लोगों के सामने? बिल्कुल, उन्होंने एक्शन प्लान कुछ अंशों में तैयार कर लिया है और कुछ अंशों में कल अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इसको पूरा फाइनलाइज कर और कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि उसके आधार पर हम अपनी उद्योग नीति और बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनी मंशा हमारे वचन पत्र में है उसका क्रियान्वयन कर सकें। जी, और आप ये बात बताइए मिश्रा जी कि हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी से तो बहुत ऐसे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट बघेल जी ने भी एक अनाउंसमेंट कल किया है फार्म लोन वेवर के लिए, पर ये जो है बहुत आप लोगों की तरफ ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि 2019 इलेक्शंस कुछ महीने दूर है। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे जवाब देंगे? ना वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 15 सालों में कुछ भी नहीं किया है। यदि हम अपने वचन पत्र को जो जनता के बीच हमने चुनाव के पहले सौंपा था, वो वोट के लिए नहीं सौंपा था, पहले सरकार बनाने के लिए सौंपा था। और जब उस वचन पत्र पर जनता ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई है, तो उसके प्रति यदि हमारी प्रतिबद्धता हम लोग पूरी करते हैं, तो यदि जिन लोगों को वोट बैंक के हिसाब से देखना है तो देखें। भाई, जो लोग मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को वोट बैंक के लिए भुनाते रहे और देश में विकास के नाम पर सिर्फ विध्वंस किया, पेट में दर्द उन्हीं लोगों को है, आलोचना वही लोग कर रहे हैं। और अभी तो कम से कम 24 घंटे भी नहीं हुए कमलनाथ जी की शपथ को। हमारे विपक्षी मित्रों से मेरी प्रार्थना है और बड़े शिद्दत के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे वर्किंग को तो वो देखें। वर्किंग की घोषणा के पहले ही वो कमेंट्स करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी एक छटपटाहट सत्ता जाने की जो है वो स्पष्ट प्रतिबिंबित होगी। मिस्टर मिश्रा,